Hi friends, how are you doing today? Thanks for joining me for today's video in which I'm going to share some idioms with you. Idiomatic phrases are helpful when it comes to IELTS speaking. However, I personally recommend avoid them in the IELTS writing test. IELTS writing में avoid the idioms. They are not going to benefit you at all. Maybe उनका नुकसान आपको हो सकता है. But अगर IELTS स्पीकिंग की बात करें, idioms can be good. But idioms आपके जो हैं वो बिल्कुल नेचुरल साउंड करने चाहिए and you should use them appropriately. It's not just for the sake of using them. बहुत सारे स्टूडेंट जो 5.5 या 6 बैंड पर अभी फंसे हुए हैं या इससे भी लो उनका स्कोर आ रहा है and they think that idioms are very important for them. I recommend them to avoid the use of idioms. Don't even consider about learning and preparing the idiom. If you are planning to score anything beyond 7.5, then idioms can be something very special. They would rather act as a cherry on the cake. It would really help you to score higher. But for that, once again, they should come naturally. ऐसा ना हो कि बस एक आपने कोई इडियम याद किया हो और ज़बरदस्ती उसे अपनी पूरी स्पीकिंग टॉक में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. You should be having a variety of idioms with you, and wherever possible you should try to introduce those idioms. Now it can be part 1, but primarily keep them for the cue card and at least a couple for the follow-up questions as well. This way the examiner would have the feel that you are really comfortable with the use of these idiomatic phrases. It's not something कि आप याद करके आए हुए हैं, बस उसे शूट करना है, कोई मैटर नहीं है कि उसका कोई मतलब आपको पता है या नहीं पता है. आइए स्टार्ट करते हैं कुछ यूजफुल idioms, not from only IELTS perspective, but रूटीन टॉक्स में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं और इनमें से एक आपके लिए हो सकता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. और ये चीज़ आपको पता है और हमने शुरू से ही सुनी है जब आप कहते थे कि पापा आपसे मैं बहुत पढ़ के दिखाऊंगा, इस बार मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा, तो आपके पेरेंट्स ज़्यादातर क्या कहते थे कि यार पहले मैंने पढ़ के दिखा, पहले फर्स्ट आके दिखा, बिकॉज दे नो दैट एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड. बातों से कुछ नहीं होता. द नेक्स्ट वन इज बॉल इज़ इन योर कोर्ट. इसका यूज़ कुछ इस तरह से होता है कि भाई अब जो करना है तुम्हें करना है. योर डिसीजन वुड बी द अल्टीमेट वन बिकॉज यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू. क्रिकेट की बात करें, दो प्लेयर अगर पिच पर खड़े हुए हैं और ये जो स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा हुआ है वो नॉन स्ट्राइकर को जाकर बोले यार हमें इस ओवर में 10 रन चाहिए, तो वो नॉन स्ट्राइकर वाला क्या कहेगा, या बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मतलब तू फेस कर रहा है, तू डिसाइड करिए 10 रन कैसे पूरे करने हैं. राइट. सो द बॉल इज़ इन योर कोर्ट. यहाँ पे पर्टिकुलरली वो क्रिकेट बॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब द अपॉर्चुनिटी और द चांस इज विद यू, सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू. नेक्स्ट वन दैट इज बीट अराउंड द बुश. ये आपने बहुत बार सुना होगा. स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश मतलब फालतू की बातें करना बंद करो. एंड मैंने अभी आपसे कहा कि राइटिंग में आप इडियम्स का इस्तेमाल ना करें, लेकिन राइटिंग में डू नॉट बीट अबाउट द बुश. याद होगा आपको, मैंने आपको कई बार बताया है IELTS राइटिंग में टास्क रिस्पॉन्स बहुत मैटर करती है. तो जितना पूछा है सिर्फ उतनी ही बात बताएं. अगर आप बहुत ज़्यादा उसको एग्जैजरेट करने की कोशिश करेंगे, एग्जामिनर आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाएगा, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर एक्चुअली बीटिंग अबाउट द बुश. आप फालतू की बातें करके उसे लंबा करने की कोशिश करें. प्रिसाइज और कॉम्पैक्ट रखें अपने आंसर को. सो द नेक्स्ट वन इज क्यूरियोसिटी किल द कैट, मतलब ओवर एक्साइटेड हो जाना. और आपने कभी नोटिस किया होगा इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में हमसे ही कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से सारा सिचुएशन ही बिगड़ जाता है. राइट. सो इन दैट सेंस वी यूज़ एज क्यूरियोसिटी किल द कैट, मतलब सिचुएशन को आप खुद ही ख़राब कर लेते हो एंड जस्ट बिकॉज बीइंग ओवर एक्साइटेड. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. ये भी बहुत बार सुना होगा, मतलब हर एक अंधेरे के बाद उजाला जैसे हम कह देते हैं, हर एक प्रॉब्लम
का कोई ना कोई हल होता है या टाइम के बाद वो सिचुएशन कोई ना कोई अपने आप रिजॉल्व हो जाती है. सो इट कैन बी यूज्ड इन मेनी क्वेश्चंस दैट डू यू थिंक ग्लोबल वार्मिंग या और कई तरह के प्रॉब्लम्स है, पोल्यूशन किस तरह की भी. सो यू मे से in for such questions you can use this idiom that every cloud has a silver lining, कि चाहे आज ये प्रॉब्लम है लेकिन आने वाले टाइम में there would be better days, yeah, we will come over the situation. The next one is feeling a bit under the weather. That means you are a little sick. For some reason आप बीमार हैं, थोड़े बीमार हो गए, तो you simply don't say that I'm ill, I'm sick. You may say that I'm feeling a bit under the weather. In fact, यहाँ पर एक cue card भी है related to the medicine. The time you had to take medicine, आप वहाँ पर use कर सकते हैं. The next one is feeling blue. ये भी साथ ही कर लीजिए. Feeling blue is the feeling when you are sad, when you are depressed. At that time, you say that, please, I really don't want to talk because I'm feeling blue, right? I'm a little depressed. To make a long story short, ये भी frequently आप notice करेंगे अब्रॉड जाने के बाद गोरे frequently use करते हैं अपनी बात complete करने के लिए, वो इसका इस्तेमाल करते हैं. To make a long story short, पूरी बात बताएंगे और उसके बाद कहेंगे to make a long story short, I'm not going to talk to this guy again. मतलब सीधी सीधी बात करूं तो अब मैं इस बंदे को नहीं बुलाऊंगा. So आप भी कोई भी बात करने के बाद opinion questions में एक दो पॉइंट देने के बाद कह सकते हैं to make a long story short, this is what actually need to be done. The next one is out of the blue. अब उस blue के साथ मत associate कीजिएगा. That is having the feeling, that is sad feeling or feeling depressed. Out of the blue is unexpectedly. और यहाँ पर ये फिर से वो क्यू कार्ड काम आ जाएगा जहाँ पर आप किसी फ्रेंड को मिले अनएक्सपेक्टेडली. सो आई वॉज at a shopping mall and out of the blue my friend was standing right in front of me in a store. मतलब आप एक स्टोर में थे और सामने आपका वो दोस्त खड़ा हुआ था जिसको बहुत साल पहले मिले थे. So he appeared in front of you out of the blue. And now raining cats and dogs. ये नहीं है कि बारिश हो रही थी और बिल्लियाँ कुत्ते गिर रहे थे, but it's just the way of saying raining cats and dog was pouring. Pouring भी बहुत तेज़ बारिश के लिए हम यूज़ करते हैं. So again I would say यहाँ पर एक cue card था, the time when you were trapped in bad weather. So if it is something related to the rain, heavy rain, you can say that it was like raining cat and dogs. That means it was raining heavily. Wet behind the ears. Maybe आपने ये नहीं सुना होगा. Wet behind the ears मतलब someone lacking experience or immature. So for kids, for children, teenagers, we can use. Some people say that they should be allowed to take their own decisions. You may say that I personally do not agree because they are still wet behind the ears, and for that reason there are high chances they may make wrong decisions, something like this. So wet behind the ears means not having good experience. Well, before I say goodbye, I would like to use another idiom. Let's call it a day or wrap it up. Let's call it a day means that is the end of the day. So in your any work, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप करके या उसे ख़त्म करना चाहते हैं या थक चुके हैं, तो अपने फ्रेंड्स को कहिए यार लेट्स कॉल इट अ डे, अब बहुत खेल लिए, घर वापस चलते हैं. या मम्मा पापा को कहिए बहुत पढ़ लिए, अब ख़त्म करता हूँ. लेट्स कॉल इट अ डे means that is the end of the day, and in fact that's the end of this video as well. I hope you like this video and you will definitely try to make use of these idioms in your IELTS speaking. Continue to practice hard and continue to watch more and more videos on Raman IELTS Coaching YouTube channel. Subscribe it if you haven't subscribed it now. Bye bye for now. Take care of yourself.